Mr. Binod Kumar, Non-Executive Nominee Director, is attending the AGM from New Delhi. We will be shortly joined by Mr. Kapil Modi also from Mumbai. This is to confirm that the requisite quorum as required under law is present at the meeting through video conferencing. Participation of members through video conferencing is reckoned for the purpose of quorum as per the circulars issued by MCA and SEBI in Section 103 of the Companies Act 2013. Therefore, I declare the meeting as validly convened. Members who have pre-registered themselves as a speaker will be allowed to speak when their names are announced and requested to speak. The audio and video mode will be opened for them accordingly. Members may please ask their queries during the meeting through communication box appearing on their screen. Answers to the queries will be given suitably. The recorded video of the proceedings of the meeting will be available on the website of the company and NSDL. The transcript of the AGM will be uploaded on the website of the company. General instructions. The company has sent notice of AGM to all the shareholders on their registered email addresses available with the company, RTA and depositories, and to the other persons who are entitled for the same. The same is also available on the website of the company and stock exchanges where the securities of the company are listed. Members may note that the facility for joining this meeting through video conferencing or other audiovisual means is made available for the members on a first-come, first-served basis. The company has received requests from a few members to register them as speakers at the meeting. Accordingly, members who have pre-registered themselves as a speaker will be allowed to speak on the announcement of the floor for questions and answers. Also, members who have missed the opportunity to drop their queries at the registered email address as given in the notice earlier or getting themselves registered now may ask their queries during the meeting through communication box appearing on their screen. Answers to the queries will be given suitably. I also draw the attention of the members to the fact that the requisite documents as referred in the notice are available for inspection electronically during the AGM. Members seeking to inspect such documents can also send their request to investor.services@pnbhousing.com. May I now request the chairman to take the proceedings further, sir. Thank you very much, Sanjay. Good afternoon to everybody. I welcome all of you. Dear shareholders, it gives me immense pleasure to address you as the chairman of your company and present the 34th annual report and consolidated financial statement of PNB Housing Finance Limited for the financial year March 31st, 2022. The global economy rebounded in calendar year 2021, posting a growth of 6.1%. The global recovery continued, but momentum was weakened, hobbled by the pandemic. The world economy now is facing re-emergence of COVID-19, inflation, scaling back of government spending, and normalization of monetary policies. The new crisis of Russia-Ukraine war and frequent and wider-ranging lockdown in China is compounding supply and demand tensions, damaging consumer sentiment and is threatening global economic growth. Inflation has emerged as another cause of concern for most economies due to global supply shock driven by the war-induced commodity price increase. The Indian economy, however, is the more resilient than before. Pandemic-related disruption notwithstanding, the country was quick to recover, aided by timely and effective policy interventions by the government as well as the Reserve Bank of India. Nevertheless, we feel that the challenges are short-term and will witness a decline in the next few quarters, putting the economy on a faster growth track. The provisional estimate for 2021-22 released by the National Statistical Office placed India's real gross domestic product growth at 8.7%. Today we are at an important junction of our journey of we near 75 years of the independence. In these years,
our nation has made giant studies and is prepared to emerge even stronger in the coming years. At PNB Housing Finance, we are proud to have played an important role in the country's progress by helping millions of Indians fulfill their aspiration of owning a house. We stay committed to this purpose as we progress ahead. The Indian real estate industry had its share of challenges even before the pandemic break out with sluggish growth seen across segments. However, the government's affordable housing program and the increased demand for space owing to the pandemic have given the sector much needed flip. As per the CRISIL, the housing finance segment was estimated at rupees 24,524 billion in fiscal 2022. On this housing loan at non-banking financing companies, including housing finance companies, accounted for rupees 8,631 billion, up 13% year on year. Given the buoyancy in the economy as well as the real estate, the housing finance sector is poised for healthy growth. Housing finance companies are attractive, positioned to tap the demand upcycle. Looking back at the last 5 years, we expect that reforms introduced like RERA and GST to bring some much needed transparency to the sector. PNB Housing Finance continue to be one of the most preferred partner for Indian seeking home finance solution. We took multi-pronged approach to steer through external challenges and make our business future ready. We continue to progress on our strategy priorities, which has kept us agile and relevant while helping generating sustainable value for our customer. By the end of financial year 2022, the company is able to attain a better performance. We continue to build our affordable housing portfolio in the retail segment and opened new location to cater the affordable loan. With our strong distribution network, underwriting capabilities and customer service. Affordable segment loan are expected to be instrumental in driving our growth. The Managing Director and CEO will brief you on performance of the company during financial year 2022 in his address. With growing income levels and a younger population, we expect that the demand for the housing will remain steadfast in the years to come. The key decider for our success will be how we reach our customers. Your company's digital approach ensure we are always on, and our strategically located physical branches mean we will offer constant support to our customers. We expect the journey forward to be excited. I take this opportunity to thank our fellow board members for their unflinching support, the leadership team and a strong team of employees for their efforts to steer through the challenges and create a stronger PNB Housing Finance for tomorrow. I also wish to thank the Reserve Bank of India, the National Housing Bank, the Security and Exchange Board of India, the Stock Exchange for their continued support. I am also thankful to the shareholder for overwhelming support. I expect that we are building a stronger PNB Housing Finance which will add significant value in the coming years. With regard, I wish you all the best. Thank you very much. Thank you, sir. I will request the Managing Director and CEO to address shareholders. Thank you, Sanjay. Good afternoon, all shareholders. It gives me immense pleasure to present to you our 34th annual report at a time when India, along with the world, is emerging out of the throes of the pandemic. India demonstrated its resilience to the pandemic and was quick to recover, emerging as the fastest growing economy in the world. With the largest young population in the world and robust economic fundamentals, it is poised for strong growth. After a lapse of several years, the residential real estate market is expected to grow. HFCs will be able to tap this opportunity. The reforms in the past few years, including the implementation of RERA and GST, have brought transparency in the housing sector. Since our inception, PNB Housing Finance has helped lakhs of Indians in realizing their aspirational dreams of owning a home. With India soon to celebrate 75 years of independence,
we renew our commitment towards the Housing for All vision. We are well positioned to catalytic growth in the real estate sector. At PNB Housing Finance, we remain committed to India's growth story. The year FY22 had started on a sober note, with the second wave of pandemic overwhelming India's healthcare infrastructure and leading to the imposition of lockdowns. The government rightly focused on accelerating the nationwide vaccination drive while continuing to undertake measures to stabilize the economy. The lockdown resulted in loss of business in Q1 FY22. While the challenges were innumerable, the team displayed solid grit and determination to put the business back on track and remained steadfast in their commitment to grow our network and connect manifold. During the year, the asset classification norms underwent changes and the COVID-19 waves had an impact on the HFC sector. This put our financial performance under pressure as well. In line with our retail-first strategy, we disbursed 97% of our total disbursement to the retail segment. As per our stated policy, we reduced our corporate loan book by 39% during the year through sell-down and accelerated prepayments. We closed FY22 with an AUM of 65,977 crores, with the retail segment accounting for 89% of our AUM. During the year, we reported disbursements of 11,246 crores, reflecting a YOY growth of 8%. Within the retail segment, we continued to build our affordable housing portfolio. We opened 24 locations to cater to Unnati loans. With a strong distribution network, underwriting capabilities and customer services, Unnati loans are expected to play a significant role in driving our growth as we move forward. We closed our Unnati book AUM at 3,108 crore as on 31st March 22. Our gross NPA as per Ind AS as on 31st March 22 stood at 8.12%. Our total provisions to total assets stood at 4.42% at the end of the financial year under review. With sustained efforts, our cost of borrowings fell sequentially, with incremental cost of borrowings during the year at 5.8% and overall at 7.3% at the close of the year. For financial year 22, net interest income stood at 1868.92 crore against 2322.91 crores in FY21. Operating profit declined 20% YOY to 1660.32 crores, while net profit reported a degrowth of 10% to 836.48 crores. With the renewed focus on retail business and reduction in corporate loans, our CRAR increased to 23.4% at the end of FY22 from 18.7% at the end of FY21. The Tier 1 stood at 20.7% and our leverage fell to 5.4 times from 6.7 times previously. We maintained liquidity of around 6,260 crores with a liquidity coverage ratio of 144%. The board has approved capital raise up to 2,500 crores through rights issue subject to necessary approvals. Owning a home is an important milestone in the life of an individual, and home loan remains one of the biggest financial decisions in one's life. And PNB Housing Finance, our focus is to ensure speed, transparency, convenience and personalization of the entire experience. Our digital onboarding tool ACE helps contactless completion of our customers' entire loan onboarding cycle. We are increasingly using digital tools in our processes to improve turnaround time and create a long-lasting impression in the minds of our customers. Our customer relationship management tool Talishma, which is tightly coupled with the dialer Amio and the core banking ESS system, stitches all the processes together so that any customer request received through multiple channels is executed within the predefined tag. During the pandemic, this digital service infrastructure allowed us to offer all the relief packages like moratorium, restructuring, GECL,
to our customers in a seamless and paperless manner, which they could access from the safety of their respective homes. We believe that holistic community development is key to our progress. During the year, our CSR activities saw us contribute 23.22 crore to improve the lives of 3.5 lakh beneficiaries. These initiatives extended from skilling programs for construction workers, investments in healthcare, and providing access to formal education. The strategic priorities adopted in the previous financial year have become the bedrock for our growth in the coming years. We have continued to sharpen our focus on business growth and collections while accelerating digital interventions to build efficiencies. We have made steadfast progress in this direction, making the organization future ready. We have a robust governance framework in place, helping us maintain high compliance standards. This has helped us inculcate a strong sense of growth of value across the organization. Today, India is one of the youngest countries in the world, and the demographic advantages sets us apart from the global economies which are aging fast. As we look ahead, we feel that the Indian economy is in much better shape to tackle external shocks. With the government's policies and specific initiatives like PLI schemes, the country is well positioned to emerge as a manufacturing hub. This in turn will have a trickle-down impact across all the sectors and help the country emerge as a $5 trillion economy. Having said that, I must conclude that the support of our stakeholders was critical in navigating through the challenges we have witnessed in the past few years. With shareholders' continued faith in us, we will be able to unlock significant value for them going forward. On behalf of all the PNB Housing employees, I am thankful to the board for being the beacon of guiding us through our difficult times. I thank all our shareholders, all our regulators for continuously supporting us in our journey. We are optimistic that an exciting growth journey has just begun for the company. Our team and their families have been pivotal in driving our journey. I thank them for working relentlessly and building a strong, value-based organization. With warm regards to all of you, and thank you. Thank you, sir. We also welcome Mr. Kapil Modi, Non-Executive Director, who is attending the AGM from Mumbai. Now, I thank you, sir. Since there are no qualifications, observations, or adverse comments on financial statements and matters which have material bearing on the functioning of the company, may I, with your permission, take the auditor's report on financial statements for FY 21-22 as read. Thank you. And before we move at agenda of the meeting, as the notice is already circulated to all the members on 30th June 2022, may I, with your permission, take the notice convening the meeting as read. I would like to take up the special business items resolutions as set forth in the notice of the AGM dated June 14, 2022. There are 6 listed items which are required to be passed as ordinary resolutions. These are item number 1, 2, 3, 4, 6 and 7. There are 4 special resolutions listed at item number 5, 8, 9 and 10. A brief introduction of the agenda item. Agenda number 1 is the ordinary resolution for adoption of audited standalone and consolidated financial statements of the company for the financial year ended March 31, 2022, together with reports of directors and auditors thereon. Agenda number 2 for ordinary resolution for the appointment of Mr. Neeraj Madan Vyas DIN 07053788 as non-executive director who retires by rotation and being eligible offers himself for reappointment. Agenda number 3 for ordinary resolution for appointment of Mr. Kapil Modi DIN 07055408 as non-executive director who retires by rotation and being eligible offers himself for reappointment. Agenda number 4 for ordinary resolution appointment of Mr. Atul Kumar Goyal DIN 07266897 as non-executive nominee director. Agenda number 5 for special resolution for borrowing funds and issue of non-convertible debentures on private placement basis. Agenda number 6 for
ordinary resolution for material related party transactions with Punjab National Bank. Agenda number 7 for ordinary resolution for material related party transactions with PNB Guilds Limited. Agenda number 8 for special resolution for restricted stock unit scheme 2022 of the company. Agenda number 9 for special resolution for employee stock option scheme ESOP scheme 3 2022 of the company. Agenda number 10 for special resolution for amendment in the employee stock option scheme 2016. I will brief you on voting. Before we proceed, I would like to inform the members that in compliance with the provisions of Companies Act 2013 and SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements Regulation 2015, the company has provided the facility to cast the votes electronically on all resolutions set forth in the notice. Members who have not cast their votes electronically and who are participating in this meeting will have an opportunity to cast their votes during the meeting through e-voting system provided by NSDL. Members can click on Vote tab on the video conference screen to avail this feature. E-voting is active. Members may please note that there will be no voting by show of hands. The company has appointed Dr. S. Chandrasekharan, failing him Mr. Rupesh Agarwal, failing him Mr. Shashikant Tiwari, partners of Chandrasekharan Associates, Company Secretaries, New Delhi, as scrutinizer for scrutinizing the electronic voting process in a fair and transparent manner. The combined results of remote e-voting and e-voting at the AGM will be declared after the report of the scrutinizer is received. The results declared along with the scrutinizer's report shall be placed on company's website www.pnbhousing.com and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com and communicated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. Thank you. This is from my side. Now, chorus operator, please. Thank you. Before we go live with the Q&A, here are some points to be noted for your convenience. Kindly turn on your video when you are projected on the broadcast screen and proceed to ask a question. Please mention your name, and each shareholder will have 3 minutes for their question. Their audio and video will be opened on the announcement of their name. Thank you. Thank you. To avoid repetition, the board will suitably answer all the questions. Once you have asked your questions, you can mute and continue to watch the proceedings. I would like to welcome the members registered themselves as speaker. Thank you. We will now begin with the question and answer session. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while we assemble the queue. I now invite our first speaker shareholder, Pradeep Sood, to please proceed with this question. Yeah, thank you, chairman sir, thank you. मैं प्रदीप सूद अपने साथी भाई अजय खुराना जी के साथ आपका पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जा रहा हूँ आपका बोलने के लिए। चेयरमैन सर, बीते सालों से आप जिस मेहनत, लगन, ईमानदारी से कंपनी के लिए डिवोशन और डेडिकेशन से काम करते चले आ रहे हैं और इस कंपनी के शेयर्स को नई ऊंचाइयां देने में लगे हैं, अच्छा डिविडेंड देने में लगे हैं और अच्छा रिटर्न देने में लगे हैं, और हमें ये पूरी उम्मीद है और आशा जताते हैं कि आगे आने वाले टाइम में भी इसी तरह से आप काम करते हुए पूरी लगन से इस कंपनी के शेयर्स को नई ऊंचाइयां देंगे, अच्छा डिविडेंड देंगे और अच्छा रिटर्न देंगे। ऐसा हम आशा जताते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम जब भी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक अच्छे शेयर्स की नई ऊंचाइयों के साथ। मैं फिर से अपने साथी भाई के साथ विचार करता हूं और हमारे कंपनी सेक्रेटरी साहब संजय जैन जी की जितनी तारीफ की जाए कम है। हमेशा सहयोग देते हैं शेयर होल्डर्स को, कभी भी हमारी कोई ग्रीवेंसेस होती है हम उनको मेल पे भेजते हैं और हमें तुरंत उसका जवाब मिल जाता है। मैं अपने कंपनी सेक्रेटरी साहब और उनके असिस्टेंट वैभव जैन जी का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि हमें इस प्लेटफॉर्म तक जुड़ने के लिए उन्होंने जो मदद करी वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और हम ये उम्मीद करते हैं चेयरमैन सर कि आगे आने वाले समय में नेक्स्ट ईयर जब हम मिलें एक नए डिविडेंड, बहुत बढ़िया डिविडेंड के साथ, अच्छे रिटर्न के साथ और शेयर्स की नई ऊंचाइयों के साथ। मैं फिर से अपने साथी भाई अजय खुराना जी के साथ आपका पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूं
और संजय जैन और वैभव जैन जी को मुबारकबाद देता हूं। और कोरस काल जिसके जरिए हम इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत बढ़िया रिहर्सल करवाते हैं। जितने भी स्टाफ है कोरस कॉल का वो बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you. I now invite our next speaker shareholder, Ankur Chanda, to please proceed with his question. Ankur Chanda, we are unable to hear you. You may request you to unmute your audio from your end and proceed with your question. While we check the connection for Mr. Ankur Chanda, we move to the next question from the line of Sarvajit Singh. You may please proceed with your question. Hello. Hello, Chairman sir. Can you hear my voice? Yes, sir. Please proceed. Hello. Chairman sir, first of all, good afternoon to you, all the board of directors, all the staff of PNB Housing Finance Limited and my co-fellow shareholders. चेयरमैन सर, हम काफी टाइम से इस कंपनी से जुड़े हुए हैं और सर जिस तरीके से हमने देखा सर पिछले कोरोना काल में हमारे शेयर का रेट डाउन भी आ गया था, उसके बाद जो सर आप लोगों ने दबा के मेहनत करके सर जो हमें एक अच्छी रिटर्न के साथ उभारा है, जो सर तकरीबन 800 के आसपास जाने के बाद सर अब थोड़ा सा नीचे आया शेयर। बाकी सर हमें सर पूरी उम्मीद है सर आपसे और आपके पूरे स्टाफ से कि सर आप जिस तरीके से मेहनत और ईमानदारी के साथ सर इस कंपनी को आगे चला रहे हैं, अब सर हमने दोबारा परचेज करे हैं तो हमें दोबारा भी सर रिटर्न अच्छा मिलेगा, ये सर हमें पूरी उम्मीद है आपसे। बाकी चेयरमैन सर अब थोड़ा सा यही पूछना चाहूंगा, आगे नेक्स्ट 2 साल का आपका रोड मैप क्या है, और सर जिस तरीके से ये ब्याज दरों में थोड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है, इससे हमारे कस्टमर के ऊपर क्या थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा है, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। बाकी सर कुछ पूछने को रहता नहीं, क्योंकि सर आपके सेक्टरल डिपार्टमेंट ने इतनी मेहनत के साथ कोरस कॉल के साथ पूरा मिलके सर हमें फ्रीक्वेंटली आपके सामने बोलने का इतना बढ़िया अवसर दिया कि सर बिल्कुल कनेक्टिविटी के साथ सर हम आपके सामने बोल पा रहे हैं। इसके लिए सर मैं आपके सेक्टरल डिपार्टमेंट और NSDL कोरस कॉल का धन्यवाद करता हूं। और सर यही चाहूंगा कि अब अगले साल सर ये कोरोना काल भगवान की दुआ से अब हट जाए, किसी को भी कोई भी समस्या और कोई भी दिक्कत ना आए, तो सर यही चाहूंगा कि आने वाले अगले साल में सर हम लोग फिजिकल AGM में मिले। थैंक यू चेयरमैन सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस। Thank you. I now invite our next speaker shareholder, Santosh Kumar Saraf, to please proceed with this question. हेलो। हाँ जी। Yes, sir. You may please proceed with your question. आदरणीय सभापति जी, उपस्थित निर्देशक मंडल सदस्य और मेरे शेयरहोल्डर भाइयों बहनों जो आज अब वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रोजेक्ट है, आप सभी को मेरा नमस्कार। कलकत्ता से संतोष कुमार साहब बोल रहा हूँ। गोयल जी आपको भी नमस्कार सर। आप कलकत्ता छोड़कर चले गए यूको बैंक को, हैं अभी आपसे मुलाकात हो रही वीडियो कॉन्फ्रेंस के कारण। आदर पता नहीं मुलाकात होती कि नहीं होती है, तो मैं आपको भी नमस्कार करता हूँ और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ भगवान से। सर अपनी PNB हाउसिंग परफॉर्म तो अच्छा कर रही है और काफी अच्छा आपकी लीडरशिप में कर रही है, लेकिन अभी भी हम कंपेरिजन करते हैं दूसरे हाउसिंग सोसाइटी कंपनियों के साथ में जो लोग फाइनेंस, उसके कंपेरिजन में अपना परफॉर्मेंस काफी नीचे में सर। तो इसके लिए क्या कारण है और क्या कदम आप उठा रहे हैं फ्यूचर में, जिससे कि LIC हाउसिंग हुआ, HDFC हुआ, और भी कई हाउसिंग जो है प्राइवेट भी है, उनके कंपेरिजन में कैंट फिन होम है जैसे, तो इनके कंपेरिजन में अपना रिजल्ट अच्छा हो, इसके लिए क्या कदम उठाएं सर। एक मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी वुमेन एम्पावरमेंट का समय चल रहा है सर। अभी हमारे प्रेसिडेंट भी कल सेलेक्ट हुई है, आदिवासी महिला वुमेन और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी वुमेन है सर। और अभी देखिएगा जितने प्राइज और गोल्ड मेडल भी लाती है वो वुमेन ला रही है सर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ सर, अपने यहाँ वुमेन की संख्या काफ़ी कम है। देखिए 1425 एम्प्लॉई आपने दिखाए हैं, उसमें वुमेन सिर्फ 15% वुमेन है। तो इनकी संख्या बढ़ाने के लिए कदम क्या उठा रहे हैं तो विचार करिएगा। मैं समझता हूँ अपने जो फाइनेंस कंपनी आदि है इसमें वुमेन को अपने अच्छे से जॉब दे सकते हैं, सर्विस सेक्टर में जॉब दे सकते हैं सर। एक सर ये जितने भी अपने वुमेन और जितने भी जेंट्स है, मैं आशा करता हूँ इनको आपने फैसिलिटी दी होगी। मेरे इसमें एनुअल रिपोर्ट में नहीं दिखा, इसलिए हेल्थ बेनिफिट, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट
और पैटर्निटी बेनिफिट और डे केयर की फैसिलिटी आपने जरूर प्रोवाइड करते होंगे, लेकिन आपकी बैलेंस शीट के अंदर में बिजनेस जो रिसोर्सेज रिपोर्ट में रहा नहीं, वो आजकल रिफ्लेक्ट करना जरूरी होता है, इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा सर। एक सर, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आपने कंपनी क्या कदम उठा रही है, क्या विचार और क्या अभी कैपेसिटी है सोलर रोलर की जो है, इसके बारे में बताने करिएगा। एलईडी लैंप जो रिप्लेस किए हैं ब्रांचों में, काफ़ी अच्छे ब्रांच है, तो विचार करिएगा जिससे अपनी एनर्जी सेविंग हो। एक सर, 1 जुलाई से जो सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हो गया है, तो कई चीज़ें अपनी फोल्डर आदि जो होती है जिसके अंदर भी कोई भी तो हमने प्लास्टिक के जो ऊपर पेस्टिंग करके लेप करते हैं, तो उस तरह की जो चीज़ें हैं उनको अवॉइड करने के लिए क्या कदम उठाएं, ये बताने का कष्ट करिएगा सर। एक सर, अपने जो जितने भी एम्प्लॉई हैं इनकी बूस्टर डोज के लिए क्या इंतजाम किया कि अभी गवर्नमेंट 75 दिन के लिए फ्री बूस्टर डोज लगा रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं 2-3 दिन पहले मेरे को भी कोविड हो गया 3 डोज लेने के बाद में, लेकिन मुझे उतनी तकलीफ नहीं हुई। तो मैं चाहूँगा हमारे जितने कर्मचारी उनकी फैमिली है उनको भी बूस्टर डोज लग जाए, कल न कोई तकलीफ नहीं हो उनको, ये मेरा रिक्वेस्ट है। लास्ट में गोयल जी है कि आपसे तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के अलावा हम मुलाकात नहीं कर सकते सर, तो ये कि कभी फिजिकल मीटिंग करते हैं आप, दिल्ली में तो जाना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है फिजिकल मीटिंग अगर करते हैं अगले साल से, तो उससे 10 से 15 मिनट का वीडियो कॉन्फ्रेंस भी रखिए, जिससे कि जो बाहर वाले शेयर होल्डर है वो आपसे अपने मन की भावना कर सके, अपने विचार प्रकट कर सके सर। ज़्यादा समय न लेते हुए आप हमारे जितने भी डायरेक्टर हैं, जितने भी अधिकारी, जितने भी कर्मचारी है, उनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ, कंपनी के अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ भगवान पिछले 2 साल हमारे कष्ट गए फाइनेंशियल, लेकिन अभी 2022 और 23 का जो फाइनेंशियल है सबके लिए हेल्दी वेल्दी और प्रॉस्पर सेफ्टी के साथ व्यतीत हो। गोयल जी एक चीज ध्यान रखिएगा, ये ड्यूल मीटिंग का जरूर ध्यान रखिएगा, फिजिकल करते मान लीजिए तो उसके साथ में हाइब्रिड मीटिंग का भी प्रोग्राम करिएगा। अभी अपने करते में केशव इंडस्ट्री ने ये अरेंजमेंट किया था 17 जून को, ऐसे इन्फोसिस वाले पहले से करते आ रहे हैं, तो उससे क्या सर ऑल इंडिया शेयर होल्डर, पान इंडिया शेयर होल्डर आपसे मुलाकात कर सकेंगे, और खासकर हम कलकत्ते वाले जितना आपसे प्रेम है हमें भी मुलाकात करने का मौका मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। Thank you. I now invite our next speaker shareholder Ajay Kumar Jain to please proceed with this question. Speaker shareholder Ajay Kumar Jain to please proceed with this question. Mr. Jain, if you can unmute your audio from your end and please proceed with your question. हेलो, नमस्कार सर, मैं दिल्ली से अजय कुमार जैन कंपनी का शेयर होल्डर बोल रहा हूँ। और सर मैं तो आपकी चेयरमैन स्पीच सुनने में ही लगा रहा, प्रश्न तो मैं सब भूल भाल गया, क्योंकि आपने चेयरमैन स्पीच और उससे पहले का जो डेमो था कंपनी का वो इतना प्रभावशाली था, लगभग सारे क्वेश्चन का रिप्लाई आपने इन एडवांस दे दिया, जो काफी वो अच्छे लगे। आज इतनी संघर्ष के टाइम में भी, इतनी विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी हम आपने कंपनी को इतना आगे बढ़ाने का सोचा, ये आपके विजन का परिचायक है, क्योंकि आप जो सोचते हैं वह दूरगामी और उसको पूरा करने वाले हमारे अध्यक्ष हैं। सर आपने जो 2 बातें मेरे को बहुत अच्छी लगी चेयरमैन स्पीच में, या जो एक्सप्लेनेशन नोट बताया था कि आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर एक के लिए घर हो, उसमें हमारी कंपनी तो प्रेरणा सहायता करती है। और आपने जो कॉर्पोरेट लोन को करने की बजाय आम कंज्यूमर के लिए जो लोन को बढ़ावा दिया, उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ और बहुत अच्छा लगा मुझे सर। आज आपने एक आम आदमी के लिए सोचा, और जिसका इम्पैक्ट उनको भी होगा लोन मिलने में, उनका घर बनाने में, और कंपनी को भी फायदा होगा, क्योंकि टाइम पे उसका पेमेंट मिलेगा। सर दूसरी बात जो आपने CSR एक्टिविटीज के बारे में कही, उसमें बहुत अच्छी आपने CSR एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करा उस तबके के लिए जो मकान बनाने के लिए श्रमिक है, और उनके लिए ट्रेनिंग के लिए वो लगा। ये लाभ के साथ साथ कंपनी को चलाने के अलावा भी आपके मन में कितनी मानवता के प्रति विश्वास है, ये उसका परिचायक है। सर आपका नेतृत्व और आपके बोर्ड में इतने अच्छे अनुभवी डायरेक्टर्स हैं, उनका परामर्श हमारी कंपनी को और ऊंचाई पे लेके जाएगा। जब समय अनुकूल हो जाएगा तो ये शेयर प्राइस है ना 4 अंकों में पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ऐसा विश्वास है, क्योंकि आपने पास्ट में करके दिखाया है। सर कंपनी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के बारे में ये कहना चाहूंगा, उन्होंने आज की मीटिंग में शेयर होल्डर को जोड़ने के लिए औपचारिकता न समझकर अपनी जिम्मेदारी निभाई, और
ये लगता है कि मैंने उनसे पूछा भी ऐसा क्या है, तो उन्होंने कहा नहीं, चेयरमैन साहब की सख्त इंस्ट्रक्शंस है कि आप हर शेयर होल्डर को जोड़िए, जो भी आता है। ये आप दोनों का मुझे बहुत अच्छा ये, और आपके सुखद भविष्य के लिए और सबके अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। Thank you. I now invite our next speaker shareholder, Manjit Singh, to please proceed with his question. Hello, sir, my audible? Yes, sir, please proceed. PNB हाउसिंग के चेयरमैन और डायरेक्टर, माय को शेयर होल्डर और कंपनी स्टाफ सभी का मैं स्वागत करता हूं और सभी को गुड आफ्टरनून। कंपनी अपनी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रही है। हाउसिंग कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कहीं भी रहती हैं, लेकिन हमारी पीएनबी हाउसिंग पे कई तरह की जिम्मेदारियां हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक स्कीम के अंतर्गत हम जो लोन देते हैं तरह तरह के, वो बहुत प्रशंसक हैं इस बारे में आप। और हाउसिंग के अलावा आप कॉर्पोरेट बॉडीज को भी जो देते हैं, और यहाँ आप रिपेयरिंग के लिए भी जो आप कंस्ट्रक्शन रिपेयरिंग के लिए भी लोन देते हैं, ये एक बहुत हर्ष की बात है। हर हाउसिंग कंपनी इस तरह के लोन नहीं देती है, ये बहुत एक बढ़िया बात है। इसीलिए आपको अवार्ड मिले हैं समय समय पर। आइकॉनिक ब्रांड ऑफ इंडिया 2 साल से आपको अवार्ड मिल रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और एक अवार्ड आपको बिजनेस ट्रांस प्रमोशन के लिए भी मिला है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। सर, मेरा आपसे यही कहना है कि आप जो हाउसिंग लोन देते हैं उसमें जो मेन मेंबर होता है जिसके नाम आप हाउसिंग लोन देते हैं, उसकी कुछ आप इस बारे में भी पड़ताल करिए कि उसकी जो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है वो कितने की है, या आप थोड़ा उसको प्रमोट करिए कि भाई तुम लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है वो थोड़ी ज्यादा कराओ। क्योंकि पिछले सप्ताह ही हमारे एक कलाकार जो टीवी पर एक शो आता है उसके अंदर एक दीपांशु भांजी थे, मलखान का रोल करते थे, उनकी डेथ हुई है और उनके जो आंकड़े निकल कर आए हैं उसमें हाउसिंग लोन उनका काफी दिखाया गया है। तो आप इस बारे में कस्टमर को प्रिपेयर करिए कि आप अपनी जो है लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है उसको भी थोड़ा ज्यादा बढ़ाइए, ताकि भगवान ना करे कि ऐसी कोई परिस्थिति आए तो जो है सारा लोन का जो है ये बढ़ाना मुश्किल हो जाए और वापस करना भी मुश्किल हो जाए। थोड़ा आप इस तरफ ध्यान दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वक्त की नजाकत है। बाकी हम आपसे जुड़ पाए, आपके सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट की मेहनत का ही हर्ष है, फल है जो हम इतनी दूर से आपसे जुड़ पाए हैं। आपके मीडिएटर ने भी मेहनत करी है और हम आपसे जुड़ पाए हैं। थैंक यू फॉर जो आपने हमें मौका दिया एक छोटे शेयर होल्डर को भी इस एजीएम में शामिल होने के लिए। थैंक यू। Thank you. I now invite our next speaker shareholder, Yash Chopra, to please proceed with his question. Mr. Yash Chopra, may we request you to unmute your audio and video and please proceed with your question. As there is no response from the current participant, we move to the next question from the line of Surinder Kumar Arora. You may please proceed with your question. नमस्कार चेयरमैन साहब, मैं सर सुरेंद्र कुमार अरोड़ा। मैं सर ये मीटिंग नोएडा से अटेंड कर रहा हूँ। चेयरमैन सर, आपकी स्पीच, आपकी इंफॉर्मेटिव स्पीच सुनने के बाद सर बहुत अच्छा लगा। मुझे प्रसन्नता हो रही है सर कि मैं ऐसी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ जो कि सर इतने अच्छे तरीके से जो हाउसिंग सेक्टर के अंदर जो लोन दे रही है आम पब्लिक के लिए, उसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या कंपनी बोनस या स्प्लिट के बारे में कोई विचार कर रही है, इसके बारे में बताएं। बाकी सर, कंपनी के जो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट है उसने इस मीटिंग को जोड़ने के लिए जिस तरीके से जैन साहब ने सपोर्ट किया सर, पूरी टीम ने जो सपोर्ट किया उसके सर को बधाई के पात्र है सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you. I now invite our next speaker shareholder, Mr. Santosh Bhutani. You may please proceed with your question. So Santosh Bhutani, may we request you to unmute your audio and please proceed with your question.
While we check the connection for Mr. Bhutani, we move to the next question from the line of Gagan Kumar. You may please proceed with your question. Yeah, good afternoon, Mr. Chairman, Board of Directors and fellow shareholders. Myself, Gagan Kumar, I am joining this meeting from Delhi. चेयरमैन साहब, जिस तरह से हमारे एमडी जी ने अपने ओपनिंग रिमार्क में बताया कि उन्नति लोन जो है वो अपनी अफोर्डेबल होम्स की तरफ जिसकी ज़्यादा पेशकश है और उसको हम लोग मैं भी उनकी बात से सहमत हूं कि आने वाले समय में ये जो उन्नति लोन है ये प्रोग्रेसिव रहेगा और हमारी कंपनी को नई ऊंचाइयां देने में इस एक स्कीम की बहुत ज्यादा इसका जो भागीदारी रहेगी सर। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा सर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है वो पीछे कुछ हाइक हुए हैं और अब आज हमारे जो कंपटीटर हैं उन लोगों से हम कस्टमर को अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जैसे लाइक प्रोसेसिंग फीस में कुछ वेवर हो या डिस्काउंट हो, कुछ इस तरह का फीचर ऐसा हो कि लोग हमारी कंपनी को अपने आप आके चुने, हमें उन्हें अप्रोच ना करना पड़े, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड एट द लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक्स आवर कंपनी सेक्रेटरी एंड हिज एंटायर टीम फॉर मेकिंग सच एन हाई स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर। थैंक यू सो मच। Thank you. I now invite our next speaker shareholder, Chetan Chadda, to please proceed with this question. Chetan Chadda, may we request you to unmute your audio and please proceed with your question. While we check the connection for Mr. Chadda, we move to the next question from the line of Asvi Pesania. You may please proceed with your question. Okay. Okay. Mr. Pesania, may we request you to please. Yeah. Chairman sir, can you hear me? Am I audible? Yes, please, yes. Okay, thank you very much. Sir, I'm Aspi from Bombay. Sir, I'm happy that you are chairing the meeting. However, I would like to tell you that rather than government selling its stake to somebody, why don't you come with a OFS for government and give it as a rights to the existing shareholders? I think that will be a better suggestion rather than going for OFS, and let it be professionally managed company like ICICI, L&T and now Yes Bank. That will be better. The second option is to merge with an existing bank, which can be a Kotak Bank. But I don't know whether Mr. Kotak will accept PNB Housing, just as HDFC Bank has been accepted by HDFC Bank. So I would like you to do something or the other, because we are just sort of drifting without anything. There is no growth in the company, nothing is coming for the last so many years. But please do not merge with PNB, because that's again an inefficient bank. So thank you very much and all the best for the future. Thank you. I now invite our next speaker shareholder, Ankur Chanda, to please proceed with this question. Hello. Yes, sir. Please proceed with your question. Hello. Yes, sir. Please proceed with your question. नमस्कार सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है बहुत बढ़िया है, इसीलिए कोई क्वेश्चन तो है नहीं। हाँ ठीक है, कंपनी बीच में थोड़ा सा जो है मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन हमारी कॉर्पोरेट इतनी अच्छी है कि वो धीरे धीरे निकाल लेगी उसको इस मुश्किल दौर से। बस यही, मैं इसी शुभकामनाओं के साथ सर आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बढ़िया काम करते रहे और हमें किसी तरह से अच्छी रिटर्न मिल जाए, बस। धन्यवाद सर। Thank you. I now invite our next speaker shareholder, Mahendra Pal, to please proceed with this question. नमस्कार चेयरमैन सर। मेरी आवाज आ रही है सर आपके पास? Yes, sir. Please proceed. जी। नमस्कार चेयरमैन सर, एमडी सर and management team. First of all, I would like to thank the company secretary and his team for sending the annual report in e-form well in, and I found that
that all section has been covered in detail and in a very transparent manner. Sir, I would also like to appreciate efforts of the management pandemic time, second wave and third wave, for taking all steps for safety of all the employees. Sir, we currently our sector is not performing well. During the last 2 years, our sector is not appreciating, even LIC housing and other big are not performing, not giving the positive returns to the shareholders. Sir, I want to know when our company will come in the position in the same level which we have seen 2 years back when our share was trading more than 800 rupees. Sir, my question is, what are the steps company is taking to strengthen business and value creation roadmap? And sir, over medium and long-term strategy, the challenges and do we have any major capex plan or the diversification in the rural area like North India, Assam side? Sir, I feel as a shareholder believe that the company management is far younger in its thinking, transparent in its working, stronger in its commitment and more responsible. सर, कंपनी के ग्रोथ बढ़ाना विपरीत स्थितियों में बहुत बड़ी चुनौती है, ये हम देख रहे हैं। और हमारी रणनीति और भावी कदम ही इस स्थिति में कंपनी को ऑक्सीजन देने में, कंपनी को आगे बढ़ाने में, कंपनी की मसल पावर मजबूत करने में ही निर्भर करता है आपके भावी कदम। माननीय अतुल सर और हमारे एमडी और सीईओ हरदयाल प्रसाद जी, आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम ये समझते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आप इस जिम्मेदारी को सहलता से और मजबूती से और पूरी टीम को लेकर आप आगे बढ़ेंगे, चाहे कितनी भी चुनौतियां और प्रतिस्पर्धा हो, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। इसलिए तूफानों से कह दो कि अब वो थम जाएं, क्योंकि पीएनबी हाउसिंग पंखों से नहीं बुलंद भरती है और ये उड़ान कंपनी को एक नई पहचान दे, ऐसा हम शुभकामना करते हैं। और इसी के साथ ही मैं यही कहूँ कि सर, कद बड़ा नहीं होता सिर्फ एड़ी उठाने से। बहुत सारी कंपनियां आती हैं, बहुत सारा प्रोजेक्शन दिखाती हैं। अभी हमने देखा पेटीएम आया, बड़ी ऐसे इशू आए जो कि बिल्कुल बहुत ज्यादा नुकसान उनको हुआ, मगर आसमान भी झुक जाते हैं बुलंद इरादों वालों से। अतुल सर, आपसे हमें बहुत बहुत उम्मीद है, हमारे सीईओ साहब से भी और दयाल प्रसाद जी से भी, कि वो शेयर होल्डर को एक प्रसाद के रूप में आने वाले 2023 कंपनी को किस दिशा में और किस रूप तक पहुंचाएंगे, ये निर्भर करता है हमारी मैनेजमेंट के आगे आने वाले कदमों से। मैं पुनः कंपनी सेक्रेटरी, उनकी टीम और हर एम्प्लॉय का, जिन्होंने इस दौर में, मुश्किल दौर में कंपनी के लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्ण अपना बेस्ट दिया और कंपनी को आगे ले गए। इन शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा और मैं चाहूंगा कि यदि आप मुझे परमिशन दें तो मेरे साथ एक दूसरे मेंबर हैं, उनका शायद वीडियो प्रॉब्लम आ गया, उनको आप अलाउ करें तो मैं उनको इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने का मौका दूं। आइए। हेलो,
Namaskar, sir. Sir, I am Santosh Bhutani. Thanks for giving me opportunity. Almost questions has been addressed in your opening remarks and no query related to balance sheet. Sir, I owe your comments on few points. Future strategy on the capital and assets quality. And second is the impact on the margin range. Third is the improved scenario. How do you plan to reward the shareholder and your nations roadmap for coming year? Thank you, sir. Thank you for giving me opportunity. Thanks a lot. Thank you. I now invite our next speaker shareholder, Charu Devendra Pal Juneja. You may please proceed with your question. Can you hear me? Yes, sir. Please proceed. Sir, and the board members and management team. First, I would like to thank your company, So sorry to interrupt. Your audio is breaking up. Is it audible now? Yes, sir. I am saying, I'd like to thank company secretary for and balance sheet on time, each and everything. Very much helpful to it. To Chairman sir, I have a question. That previously, long bought this share for 870, now it's gone up to 3 rupees. I would like to know the company's take measurement. I would like to know what measurement and what activities the company is taking, so that we can see the share price at the same level, and also what is the revenue, what is the future growth the company is forecasting and seeing in the future. This company and each and everything I would like to know. So please help us regarding that. Thank you so much. Thank you. I now invite our next speaker shareholder, Ravi Kumar Naredi, to please proceed with his question. Am I audible? Yeah. Okay, good afternoon to all. I have a question. Also, when will the bill come in the future? Second question, right now the average cost of borrowing will remain the same, or will it be less, and for how long it can be reduced? And last question, so what is your target to reduce it further, and what is the timeline? Thank you so much. Thank you. I now invite our next speaker shareholder, Bhupendra Singh, to please proceed with his question. हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? Yes, sir. Please proceed. मेरी आवाज आ रही है आपको सर? Yes, please. चेयरमैन सर, आपने जो इस साल कंपनी को प्रगति के रूप में आगे बढ़ाया, उसलिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। इसके साथ साथ जो एमडी साहब ने अपना स्पीच में कंपनी के कार्यकलापों का जो अच्छा वर्णन किया है, उससे करीब करीब हमारे जितने प्रश्न थे सॉल्व हो, मतलब मिल गए उसके जवाब। इसलिए ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता, और इसमें यहाँ पर आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि श्री संजय जैन जी ने जो पर्सनल लेवल पे मेहनत करके हमें आपसे मिलाने की कोशिश की, उसका मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप आगे से भी ऐसा ही संजय जी काम करते रहें और हमारे और कंपनी के बीच में मिलते रहें। मैं लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी ने नॉर्थ ईस्ट में हाउसिंग के लिए कितना लोन दिया, और टोटल परसेंटेज में से कितना परसेंट आपने वहाँ दिया, इस बारे में आप बताने की कोशिश करें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हाउसिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और लोगों को बहुत ही सुनने में आता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी इसमें बढ़ चढ़ के आगे बढ़े और इसमें मदद करे वहाँ के लोगों की। धन्यवाद सर। Thank you. I now invite our next speaker shareholder, Yashpal Chopra, to please proceed with his question.
Am I audible, sir? Yes, sir. Am I audible, sir? Okay, sir. Honorable Chairman, sir, I'm Yashpal Chopra calling from Delhi. Hello, I am associated with this company since that broker conference of this before pre-IPO and with the company since then. And I have seen the company going up and just making the touching the new scales and all that. But it's a matter of bad luck that last year performance was not as per expectation. Yeah, as a spokesman from the management side, I can say that the first 3 months were impacted because of the COVID, and the last 3 months were impacted because of the Russian-Ukrainian war. And the middle 6 months, that was because of the bad statement of the SEBI. So, sir, now all those clouds have been cleared. Now those penalties, whatever was to be settled with those SEBI, that has been done. So now I just want to find out what is going to be the course of our action. I will just request the management that they must see that this is a time has come when there is a need for integrity, need for transparency, and you can just see the fate of that education minister of Tamil Nadu. Is there no fund मतलब promoting or encouraging those persons who are in such a is the most important thing for us. So, Mr. Chopra, sorry to interrupt, but your audio is breaking up. even at the PNB meeting, but the matter of chance that that is Thank you. We would move to the next speaker shareholder, Mr. Chetan Chadda. You may please proceed with your question. Sir, can you hear me? Yes, sir. Please proceed. Thank you, sir. Thank you to give me the opportunity. I am really thankful to the management and the CS department who given me the opportunity to join with you. सर, इस 34th AGM में मैं आप सभी का और अपने सभी शेयर होल्डर भाइयों का जो इस माध्यम पे जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर, आपकी एनुअल रिपोर्ट मैंने CS डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट डाली थी एक हार्ड कॉपी के लिए, उन्होंने मुझे वेल एंड टाइम प्रोवाइड कराई और जब मैंने उस एनुअल रिपोर्ट के पेजेस खोल के देखे तो जिस तरीके से उसमें आप लोगों की जो पिक्चर ग्लो कर रही हैं सनफ्लावर की, मैं चाहता हूं कि कंपनी भी उसी तरह से सनफ्लावर की तरह ही ग्रो करती जाए और हमने जिस तरीके से सिर्फ 99 ब्रांचेस के होते हुए 65,977 करोड़ रुपीस का बिजनेस क्रिएट कर लिया है, अपनी एक एसेट वैल्यू खड़ी कर ली है, इसके लिए ये एक अच्छा मार्वलस स्टैंड है कि आने वाले शेयर होल्डर की जो वैल्यू है वो एक ना एक दिन अच्छी मिलेगी। हमारा सिर्फ कस्टमर बेस जो है सर 2.5 लाख का है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर हम इसे बढ़ाने के लिए और क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं, जबकि हमारा एम्प्लॉय बेस सिर्फ 1425 एम्प्लॉयज का ही है। तो अगर हम एम्प्लॉयज को भी धीरे धीरे और अपॉर्चुनिटी दें बढ़ाने के लिए और अगर हम उसी जो अनदर जगह पे हम लोन को सैंक्शन कर सकें और उसके लिए हमारे जो वर्कर्स और बेसिस में काम कर सकें, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान करें। सर, इस साल हमारी जो 22 की जो EPS है वो काफी माइनस हो गई है। लास्ट ईयर की 55 रुपीज थी, इस साल 49 रुपीज समथिंग पैसा रह गई है। लेकिन सर बुक वैल्यू पे आपने बहुत ध्यान किया है, जो 530 रुपीज से बढ़ के 586 रुपीज हो गई है, ये भी एक मार्वलस ट्रेंड है सर। उसके बाद सर पेज नंबर 10 पे भी मैंने देखा कि जो गुलाब का फूल आप लोगों ने दिया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कंपनी अगले साल तक गुलाबों के फूल की तरह और बढ़ेगी और जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं हम लोग और अच्छा करके दिखा पाएंगे। जहां तक मैंने देखा सर CSR एक्टिविटी में भी हम लोगों ने इस 22 फाइनेंशियल ईयर में भी 23 करोड़ रुपीस खर्च किए हैं, ये भी एक अच्छा मार्वलस स्टैंड है हमारी कंट्री के ऊपर। सर, एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये था कि जिन 17,000 बच्चों के ऊपर हमने स्किल डेवलपमेंट पे खर्चा किया है, हम उस स्किल के अंदर उन्हें ये भी जरूर समझाएं कि वो लोग जब अपने स्किल को कम्युनिकेट कर लें और उसमें एक्सपर्टाइज हो जाए तो उसे अपनी कंट्री के ऊपर ही और अनदर लोगों को सिखाने में और कंट्री को डेवलप करने में ही
इसकी यूटिलाइजेशन करें, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम लोग सीएसआर एक्टिविटी करते हैं और ऐसी ऐसी स्किल्स को डेवलप करते हैं, लेकिन जब स्किल्स डेवलप हो जाती है तो फिर वो अनदर कंट्रीज की ओर भागती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लास्ट 2 और 3 इयर्स डिकेड्स के अंदर 3 इयर्स में जो लोगों ने यहाँ पे स्किल सीखे थे, अब वो बाहर की कंट्रियों की तरफ स्किल अपने आप को बाहर लेके जा रहे हैं। तो हमारी इस सीएसआर एक्टिविटी में उनको ये भी एक मैंडेटरी होनी चाहिए कि हम लोग जो अपनी कंट्री का पैसा आपके ऊपर इनबिल्ड कर रहे हैं, आप आने वाले समय में इसको भी अपनी कंट्री के ऊपर ही इनबिल्ड करने में लगाएं, ताकि इससे और भी बच्चे जो है या और भी लोग जो है शिक्षित हो सके। थैंक यू सर, थैंक यू टू गिवन मी द अपॉर्चुनिटी। आई एम रियली थैंकफुल टू द सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट एंड द मॉडरेटर हु गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू जॉइन विद यू सर। और आशा करता हूँ कि अब लास्ट 3 साल से हम एजीएम को इस एओवीएम माध्यम पे कर रहे हैं और आपसे जुड़ पा रहे हैं, लेकिन आपसे मिले हुए काफी समय हो गया है, तो कम से कम एक अगले साल आने वाले समय में यदि मौके का जो टाइम सही हो तो हम एजीएम को फिजिकल मैनर में करके आपसे रूबरू होकर मिलना भी जरूर चाहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू टू गिवन मी द अपॉर्चुनिटी सर। Thank you. I now invite our next speaker shareholder Rakesh Kumar to please proceed with this question. Rakesh Kumar, may we request you to unmute your audio and please proceed with your question. Yes, sir. You may please proceed with your question. चेयरमैन सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड को शेयर होल्डर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने बोलने का मौका दिया। सर, आपने अपनी स्पीच में सब कुछ बता दिया है। क्योंकि आप Mr. Kumar, sorry to interrupt. Your audio is breaking up. हेलो हेलो Yes, sir. May we request you to speak slowly and in the same format? So you have muted your line. If you can unmute your audio, please. Mr. Kumar, may we request you to unmute your audio from your end and please ask your question. Yes, now you're unmuted, sir. You may please proceed with your question. और कंपनी को अच्छी से अच्छी तरक्की दीजिए और Thank you. That was the last speaker shareholder. Over to the members of the management. Very good afternoon to everybody, and I am very happy to hear the shareholder to take the interest of the company. So I will give the answer of all the shareholders. Most of the questions was related to what is your future plan. So I would like to tell you the company has taken an appropriate step to rebalancing its loan book. If you see in 2021 the corporate book was 89% and it was 16%. The 16% was the corporate book in the 2021 and it has been reduced to 11%. Then the amount was 11,786 which have reduced to 7,159. So this is the focus of the area is the retail. Retail maybe company is giving the focus on the salary as well as the self-employment. And if you see the percentage of the total AUM to the retail has increased from the 84% to 89%. 84% was in the March 2021 financial year and the 22 it has increased to 89%. So company has taken the right step to rebalancing its loan portfolio and reduce the concentration risk also. And if you see the disbursement of the last year total disbursement was 11,246 which is 8% to the
increase is compared to the last financial year 2021, which was 10,445. And I am happy to share, out of the total disbursement, 97% is the to retail segment. Retail may be, as I told you, retail may salary we are giving the focus and the self-employment. And as on date, we are having around 99 branches. We are having the 38 outreach, and we are having 23,000 channels to market our product. And I am happy to share all of you, last year we have added the 5 more branches, which make the number from the 94 to 99. And similarly, as far as outreach is concerned, we have also added this number from the 17 to 38, because we have giving the finance to the tier 2 and the tier 3 city. This outreach, which was the 17 in the March 21, has increased to 38. So target for the next year, because some of the shareholders are asking what is your plan. The plan is next year for the 20 to 23, our target is the 18,000 crore for the fresh disbursement, which is around 60% jump as compared to the last year disbursement. And I think the company is on the right track. Concentration risk has reduced. The gross number, which is more than 8%, will further reduce. As I told you, corporate book is declining. The another question was, one of the shareholders has told ki instead of the OFS you should give the right issue. So I would like to tell about this right issue also. The board of the company on the 9th March 2022 has already approved the right issue of the 2,500, and draft letter of offer is at the final stage. Appropriate time we will file to the stock exchange, SAB. And from the PNB side also, I am happy to share, the PNB has also got the approval from the regulator to invest around 500 rupees crore to the right issue of the company, and that we will support by 500 crore rupees, so that our holding should be 30% or less than 30%, but it should be more than 26%. So we should remain in the category of the promoter. So this is the plan of the company for the business as well as the right issue also. And future of the company is very bright, because the housing sector is such a sector. Government is also promoting. Government is also promoting this sector. And somebody was telling about the movement of the rate of interest. So I think that is not a worry for us, because if you see the borrowing cost of the company, it was the 7.30% last year. There was a dip of around 61% on account of this. We have repaid the high cost borrowing, and some of the loan we have raised to the overnight MCLR. So whatever, if there will be a movement of the interest rate in the borrowing side also, so I think we should be in a position to pass on to the customer. There should not be any worry. Only we have to think our NII in the absolute number should increase. So this is from the business point of as well as the capital side. One by one I will give the answer of the shareholder. Pradeep Soodji has appreciated the working of the bank. I thank you to them. And the another question, the Sabarjit Singh, they have told about the roadmap, which I have already told. Interest rate movement, definitely we have to remain in the market. If we will raise the fund at the higher cost, we will try to pass on to the customer. And the Santosh Kumar Sarraf, they have appreciated for the good performance of the company and the comparison with the other company. He was some worried that it is not at par. I told you, because we have rebalancing our book, because we are not making the focus on the corporate side. So this was the reason. Our performance, if you compare with the other NBFC who are involved in the housing one, that was the reason. You have also told about the women employee also. So you have told 15%. I may correct you. The number of the exact employee of the women is 1,425. That is not 15%, that is 16.35%. And we are promoting the women also. Your question was about the maternity benefit. That as per the policy of the company, we are providing all the benefit to them. And renewable energy was also your question. So we are taking appropriate steps to reduce the electricity cost. We are also trying to, some of the places we are having our own building to put the solar plant etc., so we can reduce. The another question was the booster of the dose. So I am happy to share 87% of the employee of the company has already taken the vaccination, and 100% has taken the one dose. Another question was the Mr. Ajay Kumar Jain. They have compliment for the good performance. I am thank you to them. They have told about the CSR activity. So that is already we have
given in the balance sheet also. 31.13 crore detail has already been the page number 172 note of the 32.1. Another is the detail on the 63, and number has already been advised by the MD and CEO in their interaction also. Manjeet Singh ji has told the कि one of the film star hai, somebody has come in their housing loan. I am happy to share, because there is a two type of the loan. One loan when we are giving the housing loan. So loan against whatever we are making the property, suppose they are taking the insurance against the property. So if something happen wrong to the customer, the entire money will come to the company. So their housing loan will remain intact. And another is the LIC policy. LIC policy they are taking for the life. So LIC we cannot insist, but I am happy to share the loan which we have given to our retail customer, 95% of the total loan is covered to the insurance. Already their insured property insurance is there. Another question was the Surendra Kumar Roda about the bonus as split. As on date, we don't have any plan for the bonus and split also. We will take the appropriate action at the appropriate time. Another question was the Gagan Kumar ji regarding the Unnati loan, affordable loan, they have appreciated. So it is one of the focus area. And MD and CEO has also told in his speech also, we are giving the focus for the Unnati loan also. Rate of hike I have already told, how to attract from the customer from the competitor. So we have already, as I told you, we are having the dedicated team of the marketing also. We are having the 23,000 channel partners. So we are using to go to the last mile of the any customer to create the lead. Another question from the Asuti regarding the right issue, already I have given the answer. And merge with the existing bank like Kotak, I think it is not an appropriate time to comment on this. We should merge. The company is going very good on the all the part. So I think there is no need for the merger as on date of the company. Another question from the Ankur, they have appreciated for the good corporate governance. Thank you to Ankur ji. Another question was the Mahinder Pal ji, they have also appreciated the company secretary and sector is performing good. Another is the share price. Share price, definitely it is a market driven. Company can definitely, as I told you, performance of the company will become further good, because the target of the current financial is 20 to 23, 60% growth will be there. And if there is a increase in the business, increase in the NRI, increase the profitability, I think no doubt the share price will also increase. Then Santosh Bhandari ji, no query. Charu Devtapal, Juneja ji, they have told ki what is the future growth. I have already told. Bhupender Singh ji, he told the noticement that we will send you to the, as on date we don't have the any information. Despal Chopra ji has told ki performance, I have already told ki performance, they are thinking, they have shown the concern on the performance of the company. But I told you it is we have done the rebalancing of the balance sheet. So time will come, their profitability will also increase and we will be in a position to reward the customer also. So I think I have replied all the question of all the shareholder. I am very happy to take by the shareholder taking the keen interest in the working of the company, and I assure company will do good, and future is very bright because the sector is performing well. As far as the dividend is concerned, dividend is this year we are not declaring the dividend to conserve the capital. The question was when the company will start giving the dividend. We will decide in the profitability of the. You want to add anything? Right now, this year we did not give because of conservation of the capital. We are raising capital, and the reason was to conserve capital, and it is very essential. That was one of the reasons, primary reason why the dividend was. But going forward, as the profitability and the growth comes in, that will definitely be one of the important considerations. So in case any question is left and not answered, please email to us on investor.services@pnbhousing.com and we shall respond to you at the earliest. I hope the members have cast their votes suitably. The members who have not yet cast their votes may cast their votes now. The voting process shall remain open for 1 hour. The results of the e-voting shall be announced after receiving the report from the scrutinizer not later than 48 hours of the conclusion of the AGM and shall be submitted with the stock exchanges, NSE and BSE, and shall also be available on the website of the company.
The resolutions as set out in the notice shall be deemed to be passed today, subject to receipt of requisite numbers of vote. I will request the chairman to propose a vote of thanks. Yeah, I would take an opportunity to thank all of you who have supported us during this virtual meeting and participated in the best possible manner. I hereby declare the meeting as closed. Thank you very much.